बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान के तहत हमारी फोकस्ड टेक्निकल वेबिनार सीरीज़ का सिलसिला जारी है और थर कोल के हवाले से हमारा ये तीसरा सेशन है आज, जो कॉस्ट के हवाले से है। सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अनीब टू प्लीज टेक ओवर एंड स्टार्ट द सेशन। डॉक्टर अनीब। ओके, थैंक यू ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने के ऊपर फोकस अंडर पेट्रोलियम क्लब ऑफ पाकिस्तान ये शुरू किया था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और उसके अंदर एक we had a discussion on as various aspects of Thar coal के जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से आगे क्या इश्यूज हैं और क्या हमें आगे कैसे चलने की ज़रूरत है। तो उस मेजर डिस्कशन जो हमारी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हुई, उसके नतीजे में 4 सब एरियाज सामने आए। और पहला एरिया उसके अंदर ये था कि Thar cannot be looked on its own. Thar has to be looked as integrated as part of the integrated energy plan, और उसके अंदर बाकी भी competing fuels हैं, competing technologies हैं, वो उनके इसको देखना चाहिए। So 2 हफ्ते पहले हमने integrated energy plan के ऊपर एक discussion किया which was led by डॉक्टर फयाज, और उसके बाद सेकंड एरिया जो फोकस का था वो ये था कि पार्टिसिपेंट्स का ओवरवेलमिंगली ये व्यू था कि इसकी कॉस्ट जब तक मैनेजेबल नहीं होगी उतनी देर तक हम दूसरे इसके से फ़वायद हासिल नहीं कर सकते। नेमली अगर हम इसको गैसिफिकेशन की बात करते हैं, कोल टू गैस और कोल टू लिक्विड, तो इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करने की ज़रूरत है। तो सेकंड फोकस ग्रुप जिसके ऊपर आज हम बात करने के लिए आए हैं वो यही इसका वो है, उसका टॉपिक कॉस्ट ऑफ थर कोल। जो बाकी 2 ग्रुप्स हैं उनका मैं सिर्फ जिक्र कर देता हूँ, जिसके अंदर से एक लिमिटेशन ऑफ थर, जिसके अंदर पानी की जो वहाँ पे लिमिटेशन है और ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो लिमिटेशन है वो इसका हमारा थर्ड एरिया है। और इसी तरह हमारे जो चौथा एरिया है वो गैसिफिकेशन के ऊपर और यूटिलाइजेशन ऑफ कोल के ऊपर चौथा एरिया है। सो रेस्ट ऑफ द 2 ग्रुप्स वी स्टिल हैव टू टॉक अबाउट। आज हम जो बात करेंगे थर के कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे और फोकस्ड डिस्कशन होगी, और इसमें हमें साथ ज्वाइन किया है हमारे कोलीग्स ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कोलीग सैयद अबुल फजल रिजवी, ही इज़ गोइंग टू गिव अस अ ब्रीफ ऑन वेयर वी आर ऑन block 2 and not only block 2, and then what are the issues pertaining to the cost. उसके बाद हमारे पैनल के अंदर we are fortunate to have Khalid Mansoor Saab, who is Chief Executive Officer of HubCo and pioneer of Thar Coal, first CEO of Sindh Anglo Coal Mines. We will be having Azam Khan Saab, Consultant Energy Projects. We will have Dr. Thar Abbas, who is Managing Director of CNR Limited, having all of his career in coal, and he's joined us from England. We will have Nahid Mehman, who is Chief Executive of Oracle, जो कि Block 6 में काम कर रहे हैं. We have Najm Farooqi Saab, who is Director Projects in National Automobile and Steel. सईद अख्तर अली साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर बोर्ड ऑफ SNGPL, former member of Energy Planning Commission. We will have other members as well in the panel who will be looking at the recording of this deliberation, and they will send us comments, and they include Shahab Qadir, who is the CEO and Vice President of Anglo Power Gen, and Syed Manzoor Hussain, CEO of Anglo Power Gen.
We have a couple of other names on the panel. If they join us, namely Asim, Riaz, and Hakminas, we will acknowledge them and we will have their contributions as well. So before we commence, I'll ask the president of the Petroleum Club, Dr. Said Jadoon, to say a few words and then we may commence with Said Abul Fadl Rizvi's deliberation. So says Dr. Said Jadoon. Okay, so it looks Dr. Said Jadoon is not there. Maybe we can proceed with Sayyid Abul Fadl Rizvi. Sayyid Abul, over to you, Sayyid Abul Fadl. Thank you, Dr. Aneeb, and thank you very much, Petroleum Club, Saeed Jadoon Saab, for inviting me in this August forum with such experts from the industry. I'm just a student. मैं तो खालिद मंसूर साहब तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं. For the past 20 years, I have been working for Engro, and since 2008, I have been involved with the Thar coal project. So I'll be sharing a few slides. So if you allow me, I'm going to share the presentation. Just one second. Okay. So if you can, Dr. Aneeb, if you can please confirm if you can see the view graphs. Yes, it's fine. We can see that. Okay, thank you very much. So Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Without further ado, let's talk about the Thar coal project. Focus will be on our pricing and what is the future outlook for Thar coal. So as you all know, Thar coal block 2 is leased to Sindh Agro Coal Mining Company, which is a joint venture between Government of Sindh. On the left, you can see the sponsors of the project. 54%, 55% is Government of Sindh, followed by Agro Energy Limited, who are also the managers of the project. Thar Limited, which is House of Habib, got 12%. Hapco is 8%. Habib Bank is 9.5%. And then there are two small Chinese shareholders, CMEC, who's the EPC contractor for phase 1 and 2 of the mining project, and SPIC, who's also a Chinese strategic partner with less than 1% holding. On the, just if I can move the slide, yeah, phase 1, just to update the forum where we are as far as phase 1 is concerned. In phase 1, we developed a mine of almost 4 million tons per annum capacity. COD, commercial operations for phase 1, was achieved on 10th of July 2019, 3 months ahead of the targeted schedule. And coal is being since then supplied to Engro Power Gen 2 into 330 megawatt mine mark power plants. To date, we have supplied almost 6.5 million tons of coal to the mine mouth power plants. And on the power side, Engro Power Gen has set up 2 330 megawatt power plants. And the COD of those power plants was also achieved on the same day as of the mine phase 1, which is 10th of July 2019. And since then, power is being supplied to the national grid through the Thar Matiari grid, and 6.4 billion kilowatt hours of power has been sent to the national grid as of today. On a side note, please note, up to now, the foreign exchange substitution by utilizing the 660 megawatt power plants from Thar block 2 for the past 18-19 months has been 78 to 80 million US dollars. So 80 million US dollars have already been substituted as part of the reliance on Thar coal project versus imported coal.
On phase 2, which is basically adding up another 2 into 330 megawatt power plants, the expansion of mine is already underway. We are doubling the capacity of the mine. Construction period was 33 months. Financial close for the mine phase 2 was achieved on 31st December 2019, and construction is underway, and it is expected that COD of phase 2 will inshallah be in June 2022. On the power plant side, as I mentioned, the 2 power plants. One is Thar Energy Limited, which is majority owned by HUBCO, and Thalnova Power Plant, which is majority owned by Thalnova and other stock shareholders. They are setting up 330 megawatt power plants each at the mine mouth, and TEL project achieved its FC in January 2020, and Thalnova achieved its FC in September 2022. Construction is underway on both the projects, and expected CODs for TEL is first quarter 2022, March, and June 2022 for the Thalnova power plant. With the expansion of the second phase, SECMC will achieve the basic economies of scale and reduce its coal tariff by 35% in phase 2. And I'll show you all the coal tariffs in my last slide, which is the most important one. Now, all of us know that mining is a game of economy of scale. So if I can just share with you this particular graph, which is basically talking about the coal prices. And before that, I will just share the last phase. What is happening in phase 3? I talked about phase 2. Phase 3 and beyond expansion plans is that in phase 3, we intend to supply coal to Lucky Electric Power Plants, 660 megawatt supercritical power plant at Port Qasim, which is at 92% construction right now, and will soon be operational, inshallah. Mine capacity will be tripled from 8 million tons to 12.2 million tons in phase 3. We have already signed a coal supply agreement with Lucky Electric, and financial close for phase 3 is planned in Q4 2021 with expected COD in 2024. However, these timelines are being worked on to be improved further, and management is already in discussions with the board and their sponsors about pulling it early and bringing it within December 2022. So inshallah, you'll be seeing much faster phase 3 expansion. There is another related project, infrastructure project, that is being worked on, which is the Thar rail link. As you all know, the Kokrabar-Monabao link is approximately 105 kilometers away from the Thar coal fields. A bankable feasibility study sponsored by Engro and conducted by the PRFTC, Pakistan Railway Freight Transport Company, has already been completed, and under which a new 105 kilometer rail link will be laid to link Thar coal fields to the national rail link. Transaction advisory for this study is underway, and this rail link, which the construction timeline is approximately 2 years once the EOI expression of interest is issued for the construction project. This will open up Thar coal to other non-mine mouth customers, and that basically will allow Thar coal to be utilized in other coal-based power plants, as well as customers such as cement and possibly later on alternate uses of Thar coal. Our future expansion beyond phase 3 is to take the mine capacity to 30 million tons, which is the ultimate potential of the mine. For the next 50 years, we can produce 30 million tons from Thar Block 2, and we are focusing on alternate uses such as cement, coal to liquid, coal to fertilizer, and other beneficiation products of Thar coal. Use of semi-continuous mining is also in the plans to reduce the overall production price. So expanding the mines basically enables Thar coal basket tariff to be reduced to result in cheaper electricity for the consumer. Now this price, gentlemen, this graph basically shows you in the orange line, basically
It's not the railway link, not the Lahore orange line. It's the Thar coal price orange line. You can see it has always been designed. Thar coal project was always designed in a manner that the initial price would be higher. Now there are certain factors which I will talk about in the next second last slide of my presentation. But if you look at the graph shows the dollars per MMBTU price, which is basically taking care of the comparative between imported coal and Thar. Thar is lignite and imported coal is mostly subbituminous coal. As you can see, at the first phase one, 3.8 million tons mine, our power tariff is around 10.62 kilowatt per hour. And the dark blue line basically signifies the SERA forecast of imported coal. So right now we are much more expensive than imported coal. The top one is imported coal at non-mine around inland cost like Sahiwal or other areas, but the light blue line, which is the lower one, is the imported coal price on a dollar per MMBTU basis. December 2020 coal prices की base पे ये निकाली है at Karachi port landed cost. So we are much higher than imported coal in terms of dollars per MMBTU, and that's a fact. There is no denying that. But as soon as we achieve the second phase, 7.6, you can see the dot on the orange line. The coal tariff comes down to 9.45 kilowatt per hour, and we are almost equivalent to the imported coal price at Karachi on a heating value per MMBTU basis. But the real reduction comes in the phase 3 as we start supplying coal to Lucky and expand the mine to 3 times the original size to 12.2 million tons per annum. And that's where you see we will be significantly lower than the imported coal price on a dollar per MMBTU basis, and that is around $3 per MMBTU. And I'll share the numbers later on. And as we pay off the debts, the coal price further reduces and 22 and 30 million tons because एक certain point के बाद जाके सिर्फ economies of scale से price नीचे नहीं आती. You have to look at other means of lowering the production price through semi-continuous mining, in-pit crushing, conveying, and continuous mining such as the bucket wheel excavators, जिसकी सारी feasibilities भी हुई हैं. But initially because उनका capex बहुत high है इन चीज़ों का, there is no reliable grid supply in Thar right now. तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें हो जाएं, आपके पास capex भी मौजूद हो, and you also have the reliable power supply to utilize semi-continuous and continuous mining to lower your production cost. So this was basically the long-term strategic plans for Thar coal block 2, and it is true for any coal mine that you set up in Thar. Initially, because of various reasons, cost high hoti hai, and I'll explain those reasons in the last slide in the next 2-3 minutes and finish my presentation. So this is our coal tariff comparison, gentlemen. The first year coal price during the debt repayment period, phase 1 पे हमारी जो first 10 year price है वो $61 per ton है, and नीचे जो डॉलर्स पर MMBTU में देखें तो $5.56 पर MMBTU है. फेज 2 में जैसे ही हमारे टेल और थल्लोवा के प्लांट्स आ जाते हैं तो वी विल बी एट $42 per ton. Phase 3, when we start supplying to Lucky, we will be $31 per ton, and that's the first 10 year price. It's not the levelized price. $31 per ton पे आ जाते हैं. और ब्लॉक 1 शंघाई इलेक्ट्रिक जो कि इस वक्त 1320 मेगावाट पावर प्लांट लगा रहा है, 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट इन थर ब्लॉक 1, उनकी अगर आप अभी जो सी स्टेज प्राइस जो कोल इशू की गई है उनको थर कोल एनर्जी बोर्ड से, वो अराउंड $35.38 per ton है. They are substantially cheaper than us, but उसके reasons हैं, and we can get into those later on. Imported coal at price right now, अगर हम सिर्फ डॉलर की बेस पे देखें तो इस वक्त $90.11 पर टन के हिसाब से आ रही है, जिसमें this is all at the bottom अगर आप देखें तो this is based on Richard Bay 5500 किलो कैल्स की कोल की बेस पे है. $71 पर टन FOB कॉस्ट है, उसमें अगर आप CIF और बाकी चीज़ें ऐड करें तो $90 पर टन बनती है.
इम्पोर्टेड कोल एट साहिवाल जो इस वक्त जा रहा है, साहिवाल का जो 1320 मेगावाट पावर प्लांट लगा हुआ है, उस पर जो कोल जाता है, जब पहुंचता है वहां पे, तो वो $114 पर टन के हिसाब से पहुंचता है इम्पोर्टेड कोल। एंड द टोटल डॉलर्स पर एमएमबीटी में देखें तो 5.23 है, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी हमारे ऑलमोस्ट एसईसीएमसी फेज 1 के बराबर पड़ता है हर इम्पोर्टेड कोल एट साहिवाल। नाउ बॉटम लाइन, इसके नीचे जो टैरिफ जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज द 30-year लेवलाइज टैरिफ। सो द सेम प्राइस फर्स्ट 10 ईयर को अगर आप लेवलाइज कर दें 30 ईयर्स पे, तो यू सी व्हाट इट द बॉटम टेबल, जिसमें फेज 1 की हमारी प्राइस $55 है, और देन $40 होती है फेज 2 में, देन फेज 3 में इट इज $29 पर टन, और शंघाई इलेक्ट्रिक की जो लेवलाइज है वो $32 पे होती है। सो वी विल बी cheaper than block 1 as soon as we reach phase 3 inshallah in the next 2 years or less than 2 years. Imported coal की प्राइस वहीं खड़ी रहती है, बिकॉज imported coal के ऊपर हमारा कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, दिस इज बेसिकली द सेरा forecast. So as we achieve economies of scale in our indigenous mines, our price does go down and we have control on the price वर्सेस इम्पोर्टेड कोल जो कि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट से ड्राइव हो रही होती है, तो इसकी बेस पे दे विल स्टिल बी देयर। एंड एट दिस पॉइंट अगर आप फेज 3 की प्राइस देखें, इवन इन द अपर टेबल फर्स्ट 10 ईयर की, तो एसईसीएमसी फेज 3 जो कि ब्लॉक 2 की प्राइस है एट 12 मिलियन टन्स विल बी $2.81 पर टन, वर्सेस इम्पोर्टेड कोल एट कराची विल बी $4 per ton. So we will be substantially cheaper than imported coal inshallah within the next 2 years. और एक साल बाद तो हम 3.85 पे होंगे, we will still be cheaper. अगर आप फेज 2 की भी हमारी प्राइस देखें तो $3.85 per ton is cheaper than $4.13 per ton, which is the current imported coal price at Karachi. Now this is my last slide, gentlemen, and I would conclude after that and we can have discussions. So mining is a business of scale. जो पहली कॉस्ट होती है, द इनिशियल पिट जो खोदी जाती है, उसके अंदर जो मट्टी टोटल निकलती है, दैट इज बेसिकली द रियल कॉस्ट। एंड हमारे केस में वो तकरीबन 112 मिलियन क्यूबिक मिट्टी थी, which was 70% of the total overburden which was taken out in Tarbela, which was the largest overburden earth-filled dam in the world. 151.9 million क्यूबिक मीटर था, और हमारा 112 मिलियन क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी थी। जो इनिशियल कॉस्ट हाई क्यों होती है, बिकॉज वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। थर में खालिद मंसूर साहब was involved since day one when SECMC was formed, and हमें तकरीबन 2008 से लेकर 2016 तक 8 साल लगे just to develop the project and get the financing and all the other technical details, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, लैंड एक्विजिशन है, रीसेटलमेंट कॉस्ट, बैंकेबल फीजिबिलिटी स्टडी, इनिशियल ओबी रिमूवल एंड अदर वन टाइम प्रोजेक्ट कॉस्ट। हमारी जो फेज 1 की प्रोजेक्ट कॉस्ट थी, जो एक्चुअल ट्रू अप कॉस्ट हमने जमा कराई है टीसीबी में, कोल एनर्जी बोर्ड में, it was $626 million against an approved funding plan of TCB FC stage का जो हमारा कॉस्ट हमें मिली थी वो $733 million थी। We were $107 million less than the tariff price, और इसकी बेसिस पे हमारा जो जब टैरिफ ट्रू अप होके आएगा, which is underway right now, in the next 4 months इंशाल्लाह टैरिफ इशू हो जाएगा, and we expect that to be around $58 per ton. However, जो हमारा subsequent phase 2 है, which is doubling the capacity of the mine, project cost is only $215 million. So if you can, gentlemen, compare the cost of the initial project, $626 million, versus the second expansion, which is doubling the capacity of the mine at only $215 million, and it will be even less because जो macros हैं वो favorable हैं, so it will be around $200 million or slightly less for phase 2, जिसमें mine की capacity double हो जाएगी। एंड ओवरऑल जो हमारा बास्केट टैरिफ है वो ना सिर्फ ये कि फेज 2 का टैरिफ जाएगा नीचे, बल्कि फेज 1 एंड 2 कंबाइंड टैरिफ नीचे आता जाएगा। और जैसे ही ये हमारा जो इसमें इसके अलावा जो कुछ कॉस्ट लोड अप होती हैं, उसके अंदर 7.5% रॉयल्टी ऑन कोल प्राइस है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, तो ये सारे केसेस इन केस ऑफ अगर आप इम्पोर्टेड कोल ला रहे होते तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपका ये है कि पहली बात तो ये है कि थर कोल की मेजॉरिटी प्राइस जो है वो rupee based है। Yes, there is diesel cost, yes there is capex cost and maybe any foreign technical assistance that is required, but that is not more than $30 to $35 of the price, क्योंकि हमने लोन भी चाइनीज फाइनेंसिंग की हुई थी फेज 1 और 2 में, आगे जाके हम उसको
वो भी सारे हम लोकल लैंडिंग पे चले जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें उसमें लोड होती हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है कि थर कोल ब्लॉक 2 SECMC इज 95% ओन्ड बाय पाकिस्तानी कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सो जो भी रेवेन्यूज हैं वो मुल्क में आते हैं, ROE का कंपोनेंट सारा मुल्क में ही लगता है ऑब्वियसली। जो रॉयल्टी वगैरह है वो सारी आपकी प्लाउ बैक होती है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ सिंध बैक टू थर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थर, which is not true in case of buying imported coal। तो ये सारी की सारी जो कॉस्ट है ये मुल्क से बाहर चली जाती है। And that's why, as I said, 1.5 साल में हमने $80 million बचाए हैं in terms of the energy supplied based on coal from agro power gen plants. Now going forward, we are projecting कि हमारी प्राइस जो है वो substantially reduce हो जाएगी, which is also true for all the other Thar coal blocks। और bottom line gentlemen यही है कि ultimately inshallah we will be able to achieve in the next 2 years, by December of 2022 inshallah we will be at 12 million tons capacity of mine. Phase 3 will inshallah be completed, and our overall coal price would be around $31 per ton first 10 years, and $29 per ton on a levelized basis. So that basically, gentlemen, concludes my part of the presentation. Thank you very much. I'm sorry if I've overshot by a little bit, but I think all the details were necessary. So over to Dr. Uneet. Thank you very much. जी अबुल फजल, आई विल जस्ट स्टार्ट ऑफ। आपने जो फेज 2 के अंदर बात की, डू यू हैव प्लान्स टू expand by using this bucket wheel technology or some other technology due to which the cost may further be reduced, or same वो shovel and truck technology use करेंगे? नहीं जी, हमारी फेज 2 और फेज 3 दोनों में ही शवल एंड ट्रक रहेगा, लेकिन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट टेकिंग प्लेस एज वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द माइन। फेज 2 में हम जो ट्रक्स हैं वही 60 टन कैपेसिटी के ट्रक्स हैं, 7 क्यूबिक मीटर के शवल्स हैं जो यूज हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो बकेट व्हील के लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें जो कि इंडिया में यूज़ होती हैं, डॉक्टर साहब जो अपना अख्तर अली साहब हमेशा उसको रेफर भी करते हैं कि उसके लिए जो 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो ये है कि आपके पास एडिक्वेट रिलायबल सस्टेनेबल पावर सप्लाई मौजूद हो, जो कि हमारे पास नहीं थी इनिशियल फेज में। सेकेंडली उसकी जो कैपेक्स है दैट इज़ मच हायर वर्सेस द कन्वेंशनल शवल एंड ट्रक टेक्नोलॉजी। हमने इसकी बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी में ये तीनों चीज़ें स्टडी की थी। खालिद मंसूर साहब विल कैन आल्सो वाउच फॉर दैट बिकॉज ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली कैरिड आउट द इनिशियल फिजिबिलिटी, जिसके अंदर शवल एंड ट्रक को कंपेयर किया गया था, सेमी कंटिन्यूअस माइनिंग व्हिच इज इन कन्वेइंग एंड क्रशिंग, और उसके बाद बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स। और उसमें RWE हु आर द वर्ल्ड मोस्ट बिगेस्ट यूजर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, उन्होंने किया था कि जब आपकी माइन फुल स्केल पे पहुंच जाए, यानी आपकी माइन कम से कम 1500 मीटर बॉक्स कट या 12 मिलियन टन पे पहुंच जाए, उसके बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडक्ट दीज बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स एज योर आपका जो माइन है फुली उसका बॉक्स कट डेवलप हो चुका हो। बिकॉज क्विकली एक्सपेंडिंग माइन के लिए इट्स ऑलवेज बेस्ट टू यूज शवल एंड ट्रक टेक्नोलॉजी विच हैज अ लोअर केपेक्स। यस, थोड़ी प्राइस का डिफरेंशियल होता है, बट दैट इज नॉट द कंट्रोलिंग प्राइस ऑफ थर प्राइस के अंदर जो अदर कंपोनेंट्स हैं those are more important rather than just the production price। जो स्ट्रिपिंग रेशियो है हमारा वो 6.5 से 7 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी पड़ती है फॉर एवरी टन ऑफ कोल। तो उसके लिए इस वक्त जो मोस्ट प्रूडेंट चीज़ थी वो शवल एंड ट्रक था, और वो हमारा शवल एंड ट्रक की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। अभी हम 60 टन के यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट फेज में हम 90 टन यूज़ करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह 150 टन के ट्रक और जो एक्सकेवेटर हैं 15 से 20 क्यूबिक मीटर वाले वो यूज़ किए जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर उनीत। जी डॉक्टर साहब, सॉरी डॉक्टर साहब शायद उनीत साहब ऑफलाइन हो गए। जी सर, एडमिट कर रहा हूँ दोबारा से ही, एक्चुअली वो ही गॉट डिस्कनेक्टेड। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, यस आई एम डन डॉक्टर साहब, यू कैन टेक इट ऑफ। ओके, थैंक यू अबुल फजल साहब। I think we proceed
now Khalid Mansoor साहब हमारे साथ join किया है, and he is the most experienced person in the panel. So I think I'd request Khalid Mansoor Saab to share his wisdom on the cost side and if there is any potential that can still be exploited for other blocks as well. So phase 2 and other blocks as well. So over to you, Khalid Mansoor Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Doc Saab, thank you very much. Tahir, thanks to you as well for inviting me. Actually, when I got the invitation, I am so emotionally involved still now, and very practically contributing that I just could not say no, though I had some prior commitments. But I will try to cover whatever has been not covered by Abdul Fazal Rizvi. पहली चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि one has to first of all understand the total potential if it was not covered in the past that we are sitting on one of the largest reserves, which is seventh largest in the world as far as total availability of coal is concerned, 175 billion tons of coal. And way back in 2005, when I was heading the New Ventures division, and Engro decided to diversify into energy and power. So that was the time we started to look at it. And I always wondered that why we are sitting on such a huge reserve as a country and dependent predominantly for all of our energy needs on the imported fuel. Why we have not been able to develop, which has been sitting there for decades. उसके बाद फिर आपने वो शनवा की भी कहानी सुनी, based on government to government relationship or persuasion. Shanwa came here, did some work, but the deal fell apart because few cents, क्योंकि वो मांग रहे थे probably 4.38 और हम लोग तो एक आध सेंट देने पे तैयार नहीं थे. They left, etc. तो जिस वक्त हमने इसकी स्टडी शुरू की तो clearly at least I was convinced because I remember 2006 था गालबन when I visited Thar, and I was totally overwhelmed with the world scale opportunities sitting there. And when you see the conviction was there that we have to do it because clearly that was the energy security for the country, given more than 70% of the energy needs are being met through imported fuel. और एज ए कंट्री इट इज नॉट सस्टेनेबल. और इसके अंदर अगर आप ये देखिए कि जो हम लोग रिफाइनिंग और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट करते हैं, दिस इज 25% ऑफ द एनर्जी फ्यूल, सॉरी 25% ऑफ द टोटल import bill of the country. So totally unsustainable. And then further when we started to compare ourselves के जितने भी दुनिया के developed countries हैं और the developing countries, majority of their power generation needs are met through coal. Or if we compare ourselves with India, almost 60% of our generation on coal. China is over 80%, and even the developed countries, like of European countries, etc. And when we compared ourselves, Pakistan was virtually zero, and that was the reason that the price of the power was more, and accordingly it was impacting our export capability, because that is what we have been hearing कि power इतनी महंगी है. और उसके बाद there are some planning flaws also कि जब supply demand का gap आया तो we did not really look at energy fuel mix और हमने धड़ाधड़ furnace oil के ऊपर plant लगा दिए, which is the most expensive choice of fuel. Anyway जी, if I were to really summarize my thoughts very very briefly, इस किस्म के जो projects, infrastructure projects होते हैं, they just cannot be developed by private sector alone. It has to be a public-private partnership. And I still remember one day getting a call from Secretary Coal Yunus Raga, and he invited me to his office and he said कि जब तक private sector मेरे साथ काम नहीं करेगा, because he had also 100% belief in that one, this reserve or resource could be developed. So shortest possible time में once at least I was convinced that this is the right step to take. So we agreed that okay, we will try to lay the foundation of first public private partnership of this order of magnitude. और उसमें
I think credit goes to government of Sindh. At that time, Asad Ali Shah was also assigned to this task, or Qaim Ali Shah Sahab was, you see, the chief minister. तो जिस वक्त ये proposition हमने एंग्रो के बोर्ड में रखी, तो entire board was very very skeptical कि ये किस किस्म की public private partnership होगी और सिंध से कैसे काम होगा, and whether or not they will continue to play the ball, etc. But when we started to actually move in that direction, it was amazing that anybody and everybody who started to join this journey with this slogan that the Thar promises energy security for the country, 100% credit, goes to government of Sindh, the way, they have outrightly supported. I remember कि जो first feasibility, bankable feasibility study का budget था, so that was about $10 million. और उसके अंदर at that point in time, government of Sindh was, 40% and Agro was 60%. And, the skepticism of some of the board members were कि ये जो इन्होंने contribution करनी है for, feasibility study, it would never ever see the daylight. But trust me, when the call was made, the money was in the joint venture company in less than 2 days. और उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं कि it was clear right from the very beginning कि अगर ये proposition को आगे लेके जाना है तो उसके लिए infrastructure को develop करना है. What is infrastructure? Which is, you see, transmission line, जिससे हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद चाहिए. उसके बाद effluent disposal system. Because once you start to dig the mine, you are confronted or experienced with different aquifers, and those are the kind of, I would say, unknowns. जिसके लिए, हमारे ऑनरेबल मुबारक मंद कहते थे कि ओपन कास्ट माइनिंग हो ही नहीं सकती है, कि जैसे ही आप एक सर्टेन डेप्थ पे पहुंचेंगे तो इट विल बी ऑल कीचड़ एंड ऑल दैट, एंड ही केप्ट ऑन, अपोजिंग दैट. उसके बाद you need to have many other infrastructure, you see, the supply of water. उसकी एक अलग story है कि where we started and what we actually ended up. It is very unprecedented. वो जो waste water है पूरे कंट्री का, उसको प्रोसेस करने के बाद that is going to be a dependable source. और इस वक्त जितना भी पानी आपका अंडरग्राउंड निकल रहा है, that is being utilized by the 2 power plants. Bankable feasibility study was done not by any other entity, but you see, RWE of Germany, who are arguably the most experienced and knowledgeable entity in the world as far as open cast and also the lignite mining. और cost को control करने के लिए Sinopol को use किया गया, and through this combination, this bankable study was done. And the major issue continued to be financing. और ये मैं आपको बता दूं कि in the development phase we tried European funding, we tried World Bank, and I remember I went New York, the World Bank experts many times, but virtually they refused. And finally, thanks to our time tested friend China, और उनके through ये funding आई, but उसके अंदर भी great challenges थे. और वो challenges ये थे कि इसमें जो sovereign guarantee क्या होगी. And initial the sovereign guarantee was only available for power plants, and that's what we said, it's a back to back. कि कोयला निकलेगा वो power को देगा, और power जो है it has got sovereign guarantee in terms of implementation agreement, or that will kind of backflow, but the Chinese financial institution refused. और अच्छा, अब main issue ये था कि belief was not there. Because if the sovereign guarantee is to be given by the federal government, everybody virtually, just did not believe in it. We are sitting on that kind of resource, or whether that is exploitable or not. So it was a kind of untiring effort. And again, I give credit that anybody I wanted from government of Sindh, they assisted me to go to each and every interface in the federal government. And finally, उसको करने के लिए 2 things were needed, एक sovereign guarantee और एक fiscal incentive package. क्योंकि जब तक fiscal incentive package ना हो, because the proof of the concept was not there, the mining was supposed to be done for the first time. बस वो वाला जो एक turning point, active point था, वो ये था कि final presentation दी गई, उसके बाद एक committee बनाई गई, it was ministerial committee, they reviewed at it, including the planning commission के जितने experts हैं. तो उनसे एक तो फिस्कल इंसेंटिव पैकेज का अप्रूवल चाहिए था, which ECC gave, और also the approval to lay the transmission line. If you don't have transmission line from there, then obviously you cannot really dispatch the power. Feasibility study हुई, और उसके बाद where we are today, कि एक चीज मैं आपको बता दूं, and Abul Fazal Rizvi will really vouch for me,
कि whatever has been envisaged in the feasibility study कि you have to dig as high as 195 meters and किस टाइप का बॉक्स कट होगा, कितनी स्लोप होगी. Alhamdulillah, because I have been now a part of the board for Sindh Mining Company, कि there has not been a single surprise. So that was the quality of bankable feasibility study. और दूसरी चीज जो मैं आपको बता दूं कि which was very important, and in fact it was very very close to our heart, and Asad Umar Sahab at that point in time was CEO of Engro Corporation. कि हमने कहा कि जी कि हम ये अंडरटेकिंग करेंगे और सारा कुछ करेगा एग्रो, but you see we have to do something for the poorest cross section of our society which is Thari. तो उसके लिए जो प्रेजेंटेशन दी गई आपकी सिंध कैबिनेट के अंदर, तो उसमें इट वाज अप्रूव्ड विद यूनैनिमिटी. और एक चीज मैं और बताता चलूं कि ये जो सिलेक्शन ऑफ एंग्रो थी एज ए प्रेफर्ड पार्टनर, दैट वाज डन थ्रू इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, एंड दैट्स द रीजन अल्हम्दुलिल्लाह देयर हैज नॉट बीन एनी फिंगर पॉइंटिंग कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ये किस तरीके के साथ फॉर्म है. तो पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस चीज को अप्रूव किया कि 2% ऑफ द प्रॉफिट्स 2% of the profit will on perpetuity until the life of this project would continue to be spent on the development of the local people. और प्रोजेक्ट के अंदर भी उसकी खास कॉस्ट रखी गई और उसके अंदर जितनी ये रिक्वायरमेंट थी, इट फॉलोज द इंटरनेशनल फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स. और जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है थर में जाने के लिए, आई थिंक देयर इज नो अदर एग्जांपल इन द कंट्री द वे the infrastructure, whether schools and hospitals and many other livelihood की जो interventions है वहां पर उन लोगों के लिए की गई. और ये जो खालिद मंसूर साहब, नीफ साहब, बस जस्ट मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये इट्स अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी जो खालिद साहब ने बताई है. दैट्स अ ग्रेट वेंचर. हम आज फोकस कर रहे हैं कि हाउ टू हैव ए कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन. जिस तरह माइनिंग की कॉस्ट अब्दुल फजल ने कहा रिड्यूस हो रही है. आप मेरे ख्याल में नजम फारूकी साहब से पूछ सकते हैं कि cost optimization, what else we can do to optimize the cost of mining in the Thar coal, जो मेजर हमारा फोकस एरिया है. थैंक्स फॉर इंट्रोडक्शन सर. ओके, चाहते हैं मैं 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता हूं. तो ओके, आई थिंक I would say within time allocated to me, if you kindly allow me to complete, I'm not here to tell you the stories, I'm just giving you the context, कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये हुआ है. बट एनीवे, थैंक्स फॉर द इंटरप्शन. अच्छा, अब ये कि गोइंग फॉरवर्ड अब मेन चीज यही है कि अब्दुल फजल रिजवी से आपने सुन लिया कि दिस इज द गेम ऑफ स्केलेबिलिटी. क्योंकि जब तक आप माइन को स्केल नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ द कोल कम नहीं होगा, और फ्यूचर के अंदर जितनी भी हमारी पावर रिक्वायरमेंट है उसके लिए यू हैव गॉट एनफ कोल. और फ्रॉम यू सी ब्लॉक 2 जो कि एंग्रो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जॉइंट वेंचर कर रही है, इट इज गुड फॉर 5000 मेगावाट. बट नाउ द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मुल्क के अंदर एक्सेस पावर आ गई है. तो आई डू नॉट फोरसी कि अदर देन द 2 प्रोजेक्ट जो कि एंग्रो हपको कर रही है, और इस हपको के अंदर वी हैव गॉट द मेजॉरिटी इक्विटी. आई जस्ट वांटेड टू करेक्ट अबुल फजल, बोथ टेल एंड थलनोवा के अंदर वी हैव गॉट द मेजॉरिटी इक्विटी. और उससे जो माइन की डबल होगी, उसका 100% कोल जो है हम ऑफ टेक करेंगे, उसकी रेलेवेंट प्राइस आपने देख ली. फेज 3 के अंदर भी हम इन्वॉल्व हैं, जिससे बेसिकली कोयला जो है आपका वो लकी सीमेंट को जाएगा. और देयर आफ्टर देयर आर कपल ऑफ प्लेयर्स हु आर स्टिल इन अर्ली डेवलपमेंटल फेज. तो उसके बाद जितनी नेक्स्ट एक्सपेंशन आनी है फॉर द पावर जनरेशन, लेकिन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years you see the mine की expansion to really increase the capacity and use that coal for power generation is unlikely because excess power है. It is only month and a half ago कि CCC का जो मीटिंग हुई है उसके अंदर थर को again a lot of priority has been given collectively by the center and also by the province. और उसके अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियरली बताई गई कि if we were to reduce the cost of the power जो ऑलरेडी प्लांट लग चुके हैं या लगने जा रहे हैं, तो उसके कोल की प्राइस को कम होना चाहिए. तो उसके बाद क्या हुआ कि जी एक सी पैक अथॉरिटी ने एक मीटिंग की, और उसके अंदर उन्होंने जो मेजर प्लेयर्स हैं हु हैव सम इनहेरेंट इंटरेस्ट इन रियली स्केलिंग अप द माइन कैपेसिटी, नॉट फॉर पावर जनरेशन बट ऑल्टरनेटिव, तो उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हुई. और आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि 4 companies have decided to take this initiative further, which is Engro, Hapco, Fatma and Fertilizer Company.
और उसके साथ सीपैक अथॉरिटी की जो वो मीटिंग हुई, इट वाज चेयर्ड बाय असद उमर हिमसेल्फ, और उन्होंने हमें गवर्नमेंट की फर्म कमिटमेंट भी दी कि आप इसकी प्रोपोजिशन डेवलप करें कि हाउ वी कैन यूज कोल फॉर पर्पसेस अदर देन पावर जनरेशन, which is essentially the coal gasification, and then gas to liquid GTL, and उससे आप petroleum products जो है वो भी बना सकते हैं. And it is not just the theory. I had the opportunity to go and visit a huge complex on the same concept in China, और चाइना के अंदर इनर मंगोलिया के अंदर coal with a specification similar to Thar lignite, they have been very successfully demonstrated over there. और उसके बाद अगेन जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि अगर आपने इस राउट पे जाना है टू इम्प्रूव द कॉस्ट ऑफ द कोल पर टन एंड सब्सिक्वेंटली यू सी कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? एंड अगेन बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी मेड इट वेरी वेरी क्लियर टू सीपैक अथॉरिटी कि दिस हैज टू बी इंक्लूडेड इन द सीपैक स्कोप. तो नेक्स्ट JCC मीटिंग जो है गोइंग टू बी नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, एंड वी गॉट देयर कमिटमेंट कि वो इसको JCC के अंदर और सीपैक के अंदर इसको इन्वॉल्व करेंगे. अभी इसके ऊपर डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो गई, बिकॉज यू कांट रियली शॉर्टकट द प्रोसेस कि ऑल्दो इसके अंदर डेमोन्स्ट्रेशन है, तो कलेक्टिवली इसके ऊपर काम शुरू हो गया है. रिलेटिवली स्पीकिंग एंग्रो ने इसके ऊपर काफी डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी की है, बट इट इज ए क्वेश्चन ऑफ के टेक्निकल वायबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टडीज अब तक हुई हैं, तो दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग that given some incentives given to the developer, the coal gasification and using that gas for fertilizer, क्योंकि remember कि मुल्क के अंदर तकरीबन 4 मिलियन टन पर एनम की आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, और इंडिजिनस गैस इज डिक्लाइनिंग, और इस वक्त जो अवेलेबल गैस है फ्रॉम द रिसोर्सेज व्हिच आर ऑलरेडी डेवलप्ड, तो इट इज almost 3.7 or 3.7 billion cubic feet per day की गैस है, which is much shorter. That's why RLNG import की जा रही है. अब अगर indigenous gas develop नहीं होती है, and it is another initiative which must be taken by the country, so then more and more dependence is going to be on RLNG, which is a very expensive proposition, or plus it's going to be imported fuel. तो उसमें जो इस वक्त प्राइमा फेसी जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि अगर आपने थर कोल को गैसिफाई किया तो उससे इट कैन सपोर्ट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, और वर्ल्ड के अंदर अदर देन चाइना इट इज वेरी सक्सेसफुली बीइंग डन. और नेक्स्ट फेज के अंदर देन व्हेन द कॉस्ट ऑफ द कोल विल बी रिड्यूस फर्दर, तो देन द सब्सिक्वेंट फिजिबिलिटी ऑन गैस टू लिक्विड के ऊपर भी अब डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की है, एंड दीज आर द 4 पार्टनर्स हु हैव जॉइंड हैंड्स. और इफ वी कंटिन्यू टू वर्क विद द सेम कन्विक्शन and passion, so there is no doubt that inshallah ta'ala this resource could be utilized and reduce the huge import bill of the country, or this is going to be making country inshallah ta'ala self-sufficient. Okay, thank you Khalid sahab, thank you for the detailed brief. इसके अंदर जब लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई इसके ऊपर, स्पेशली ऑन द कोल गैसिफिकेशन एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ कोल, तो इसके अंदर एक पॉइंट ये आया कि the downward price of coal which is coming to $30 in some time, वो भी कोल गैसिफिकेशन के लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगी. सो नोइंग व्हाट वी नो नाउ, और फिर एक और पॉइंट ये आया कि क्या इजाफी पिट्स को ओपन करने से कोई इसके अंदर कॉस्ट लो हो सकती है. सो आई फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी गेन्ड नाउ, what are this 3 or 4 things that need to be done in order to bring, whether it's through technology or financing or by some other means or by opening some new pits? So kindly इस ऊपर देखो यार, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो टारगेट है ना जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि वी वुड लाइक टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ द कोल $25 पर टन. ये इट्स ए काइंड ऑफ इमेजिनरी नंबर, जिससे लगता ये है कि फर्दर यू सी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ थर कोल थ्रू गैसिफिकेशन, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग डीजल है और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है, उसको अचीव
किया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिकली आपको पहले एक ही माइन को एक्सपेंड करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बाकी ब्लॉक्स को खोलना है या नहीं खोलना, तो दे विल हैव टू गो थ्रू द सेम काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ द कोल डाउन। क्योंकि जिस तरह अबुल फजल रिजवी ने बताया, आप देखिए कि जब इनिशियल माइन थी, क्योंकि उस वक्त प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट वाज नॉट देयर, उसमें तो कुछ लोगों का ये भी था कि पता नहीं नीचे कोयला निकलेगा भी या नहीं निकलेगा व्हेन यू गो सो डीप डाउन। तो वो कहाँ पर थी प्राइस, उसके बाद फिर दूसरा फेज आया, वो कहाँ आ रही है। तो ईच माइन विल हैव टू गो थ्रू स्केलेबिलिटी टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ द कोल डाउन। तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि पहले आपको स्केलेबिलिटी जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तो आपको कॉस्ट ऑफ द कॉल कम नहीं होगी, और कॉस्ट ऑफ द कॉल अगर कम नहीं होगी तो देन वेदर इट इज यूजिंग गैसिफिकेशन के लिए या गैस टू लिक्विड के लिए और इवन फॉर पावर के लिए, ये कॉस्ट का इशू जो है वो चलता रहेगा। I think I'll invite Najam Farooqi Saab, I think, because he had made this point about in the just opening up more pits. So Najam Farooqi Saab, would you like to make a comment there? हाँ, देखिए खालिद साहब ने पूरी हिस्ट्री बता दी एंड द रीजंस बिहाइंड इट एज वेल। मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि दुनिया में कहीं भी माइनिंग जब होती है तो माइन को उस बेसिस पे डेवलप किया जाता है कि क्या उसका प्रोडक्ट जो है वो उस वक्त की इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से बिक सकता है कि नहीं बिक सकता। यही आप सैंडिक में देख लें, यही दुनिया में कहीं चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, कहीं चले जाएं, और अगर वो वायबल नहीं होती है तो माइनिंग नहीं की जाती है। अब पाकिस्तान की जरूरत थी या हम समझे कि भी हम एक कोई चीज डेवलप करना चाहते थे, तो इनिशियल सब्सिडी पे मुझे कोई एतराज नहीं है कि भी इनिशियली आप किसी चीज को, नई चीज को डेवलप करना चाहें तो सब्सिडी दें, मगर सब्सिडी जो होनी चाहिए वो माइन पे होनी चाहिए, ना कि उसके प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंशियल मॉड्यूल बनाया गया, इसमें जो बेसिकली सब्सिडी दी जा रही है वो प्रोडक्ट पे दी जा रही है, एंड दैट इज नॉट वर्केबल एंड दैट्स नॉट सस्टेनेबल। अब आप ये एक मिसाल देख लीजिए कि शंघाई वालों ने आके पहला जो दूसरा पिट खोली है, उनकी प्राइस कितनी कम आ गई है। मतलब ये बता रहे थे कि जो $31 के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर शुरू में ये टारगेट करते कि भाई वर्ल्ड मार्केट में इस वक्त प्राइस $30 चल रही है लिग्नाइट की, तो मोस्ट प्रोबब्ली अगर दे वर फोर्स्ड टू डू दैट, ये उस वक्त भी $30 हो जाता। मुझे तो रिजवी साहब ने जो वो प्रेजेंटेशन दी है उसके अंदर पीरियड कहीं नहीं लिखा। मतलब उन्होंने कहा जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई आप इसके अंदर ये भी तो लिखिए कि ये कब होगा, ये कब होगा, थर्ड फेज कब होगा, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आप 2050 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग नाउ। मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के अंदर ये प्राइस सस्टेनेबल है? इस वक्त पावर के ऊपर मोस्ट प्रॉब्ली गवर्नमेंट उड़ने का चांस हो रहा है, क्योंकि ये प्राइसेस जो है हमारी पावर की और हमारी गैस की प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि इसको लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आर वी गोइंग टू लुक आफ्टर द पीपल जो कि इस चीज को, जो जिन्होंने इसको यूज करना है, या आप एक हमारा विजन होता है, हम लोग हमारी एक विश होती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हाई डोंट वी ओपन इट अप? क्यों व्हाई दे आर रेजिस्टिंग? क्योंकि ओपन होने से कंपटीशन होता है, और वी हैव सीन दैट। एक पिट खुली है, उससे कितना फर्क पड़ा है, दूसरी पिट, तीसरी पिट। आप ये कहें कि जी ये आपकी, देखो मैं अगर आज माइन कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, और हमने ये कहा है कि माइनिंग जो है एक वो अलग चीज है। जब आप उसको डेवलप जब हो जाती है, उसके बाद जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो माइन का हिस्सा नहीं है, उसके अंदर कैपेक्स नहीं आना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट आनी चाहिए। इन्होंने जो कैपेक्स बनाया है वो मेरे ख्याल में 7 में 10 साल का ऑपरेशन कॉस्ट भी उसके अंदर ले लिया है। दैट्स व्हाई द कॉस्ट हैज वेंट अप। द फाइनेंशियल मॉड्यूल इज फॉल्टी, इट शुड नॉट हैव बीन दैट है। मगर मेरे ख्याल में फ्यूचर के अंदर हमें ये मेक श्योर करना चाहिए, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ये सिंध कोल बोर्ड का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये कहे जी कि इस प्राइस के ऊपर आप कोल हम आपसे लेंगे या आप हम साइन करेंगे। क्या बलूचिस्तान के अंदर जो माइनिंग दी जा रही है, दूसरी चीजों की जो माइन है, उसमें क्या हम लोगों ने कोई कॉस्ट मुकर्रर की है?
It should be international price. अगर international price पे produce नहीं कर सकती mine, it should not be open at all. तो ये सबसे पहले तो ये change करना चाहिए. अच्छा सर एक सेकंड नहीं, एक यार मुझे अगर इजाजत दें, फारूकी साहब जी फारूकी साहब की क्रिटिसिज्म से मुझे वो जमाना याद आ गया when we started this journey, everybody was virtually against कि ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए. फारूकी साहब आई थिंक अगर जो आपके फंडामेंटल सवाल है ना, तो माजरत के साथ अगर आपको उसका सही जवाब चाहिए ना, तो हैव ए मीटिंग विद अस फेस टू फेस, इजियर सेड देन डन. क्योंकि जो आप कह रहे हैं, why should I have meeting with you? You are not a party. आपने एक माइंड बना ली है, आप कीजिए काम आपका. We are talking to the government now. कि गवर्नमेंट ने फर्दर अलाउ करना कि नहीं करना, आप एक पार्टी हैं, you know. I'm not talking to you. इजाजत तो देना, बात तो नहीं, करने की आपने पूरी उसकी स्टोरी बयान कर दी, और मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में फर्स्ट माइन में सब्सिडी दी गई. इवन नाउ आई विल से, अगर एक आके कहता है कि जी मुझे माइनिंग को इसको सस्टेनेबल करने के लिए मुझे $100 मिलियन की सब्सिडी चाहिए माइन करने के लिए, मगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट ये होगी जो कि वर्केबल है, I will allow that. I will say yes, please give him the subsidy in development of mine, but no subsidy on the product itself. दुनिया में नहीं होगा. दुनिया में नहीं. पहले आप सब्सिडी को आप डिवाइस कैसे करते हैं? Which thing you are talking about subsidy? Basically जो ये सब पेट्रोलियम वाले लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये शेल का शुरू हुआ, in last few months lot of companies shut down because उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट $35 से ऊपर होती थी और वो नहीं चली, बंद हो गई. So that's the thing, कि प्रोडक्ट जो आप दे रहे हो, जिसने यूज करना है, उसको वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से होना चाहिए. नजम साहब ने बात करने से पहले आपकी बात समझ, नजम साहब आपकी बात हो गई, आप लेट हिम टू स्पीक. खालिद मंसूर साहब को जस्ट आप एक दूसरे का पॉइंट जरा इजीली सुनेंगे तो फिर मामला ठीक होगा. देखिए सर, इफ यू बिलीव दैट वी हैव bring something to the table, या आप हमारे से सुने, या I will just log out. I am not here to continue with a preconceived idea कि सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हुआ, फाइनेंशियल मॉडल भी गलत है, ये भी गलत है. I'm sorry, that's not the way the webinar should be conducted. If there are some people who are facilitating, they must. I'm looking at the results only. भाई जवाब वक्त तो दो ना. जवाब सुने जी. खालिद मंसूर को बोलने दे, खालिद मंसूर साहब को बोलने दे. लेट हिम टू बोले ना सर, वो मेरी बात शुरू कर दी ना, बोले जी. खालिद sir, I think I will log out. With this kind of attitude and behavior, I'm not available for such kind of stuff. Sorry. I think Khalid, एक second. I think the way he is speaking, look at his tone, look at his the way he's trying to ridicule. This is not the way to. I think first of all, I think Khalid साहब, I think अगर हमें बुलाया है कि कोई चीज सो जाए तो हम आपको प्रोफेशनली जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड आपको बताएं, तो हमें मौका तो नहीं सुनने को. विद repeated interruption and all that, how on earth you are going to be getting our view, which is the reality? सर रियलिटी तो सब देख रहे हैं. खालिद साहब, आपने कोई सजेशन किया है प्राइस डाउन करने की? कोई सजेशन किया स्वाई के इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए? इसके अलावा कोई सजेशन दिया आपने? मुझे बताइए. आप फारूकी साहब को दे दें माइक. we just step out. इनके पास सारा नॉलेज है, इनके पास सारा तजुर्बा है, तो ये इनकी कर. थैंक यू वेरी मच. I think Khalid साहब, एक सेकंड. I think okay, I think the original objective was I think थोड़ा सा हम ड्रिफ्ट कर गए. ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अबुल फजल की प्रेजेंटेशन के बाद खालिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, बिकॉज ही बीन इन्वॉल्वड इन फॉर वेरी लॉन्ग. I think we should still continue with the discussion. हमारा ख्याल ये था कि खालिद साहब because he was tight with his schedule, he will give his 10-15 minutes and then we'll continue the discussion. So I think with all this, I think let's continue our discussion and then maybe we'll look. ठीक है डॉक्टर साहब. डॉक्टर नीम, मुझे सर सिर्फ एक सवाल का जवाब देने दें. नजम साहब ने एक सवाल किया था कि जो नेक्स्ट एक्सपेंशन की बात है ये कोई 2050 में आ रही है, ये कब आ रही है? मैंने आई थिंक बताया था, शायद नोट नहीं किया. जो हमारा फेज 2 है वो अगले साल जून में, यानी कि 14 महीने बाद इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. एंड दैट विल ब्रिंग थर कोल प्राइस इक्वल टू द इम्पोर्टेड कोल प्राइस. फेज 3 में जो लकी है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन प्लान शुरू कर दिया है, और दिसंबर 2022 यानी आज से एग्जैक्टली 23 महीने बाद, नजम साहब नोट कर लें, 23 महीने बाद
थर कोल की प्राइस $31 होगी और जो कि इंपोर्टेड कोल से 30% सस्ती होगी एट कराची पोर्ट. So it's not pipe dream, it's not 5 years, it's not 10 years, it's exactly 23 months from today. Thar coal price will be 25 to 30% cheaper than imported coal price from block 2. And I'm only talking about the mining price, sir. So आपकी बात सही है. Thank you. इसका जरा सा मैं आई लाइक टू आंसर दैट. बात यह है कि उस वक्त क्या कैपेसिटी होगी आपकी जब ये प्राइस आएगी? 12 मिलियन टन की. 12 मिलियन टन. ओके, सो see what they are trying to do is, and but they have no other choice, कि आप कैपेसिटी को बढ़ा के आप प्राइस रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. हम ये चाह रहे हैं कि प्राइस इसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के बजाय क्या सिस्टम्स अडॉप्ट किए जाएं, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए जिससे कि प्राइसेस कम हो जाए. ओके, अब नाजिम जी, अगर आज ये सॉरी अगर ये आज इनसे ये कहें कि अगर ये वो अपना ड्रैग एक्सकवेटर्स और दूसरी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, क्या इससे और कम हो जाएगी प्राइस या नहीं होगी? मतलब we should be targeting not $31, but maybe we should be targeting $25. So have they given any suggestion except capacity increase कि आप उसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात ना करें. अब हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे अपने अख्तर साहब ने की थी, उस वक्त मैंने भी की थी कि भाई हमें चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करें ताकि इसकी प्राइस कम हो. Can I ask you a question, Najim Saab? Let me ask a question. On the Shanghai front, where we saw a drop in price, can we put down certain steps? I think maybe Akhtar Saab can comment on that. कि वो क्या steps थे जो कि शंघाई ने किए that actually was reduced price was it resulted in reduced price. अब अगर मैं उसका जवाब दूंगा तो पसंद नहीं किया जाएगा जो मैं जवाब दूंगा. They did exactly what they did, but they were more competent and they were more उनको मालूम था क्या करना है कि कॉस्ट उन्होंने अपनी कंट्रोल की है. That's what it is. It's exactly same type of mining, but they have controlled the cost. उन्होंने इनकी प्लानिंग में वो चीजें नहीं थी. Most probably वही काम कर रहे हैं. वही 7.5 मिलियन के ऊपर उन्होंने कीमत इतनी कम कर दी है जो इन्होंने 12 मिलियन की बात कर रहे हैं और इतने अर्से की बात कर रहे हैं. So I'd like to invite Akhtar Ali Saab. I'm mindful that I think rest of the people, Akhtar Ali Saab, kindly इसी के ऊपर what different has been done by Shanghai or kya, and then forward looking, what steps need to be taken going forward? Akhtar Ali Saab, आपकी आवाज म्यूट है. जी म्यूट कर दिए, फिर दोबारा. अख्तर साहब आप अनम्यूट करें. आप ठीक है? आप ठीक है जी. असल में साहब बात यह है कि बहुत फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम मेरी नज़र में रहे हैं. अब फाइनेंसिंग का आलम ये देखिए ना कि 20% रेट ऑफ रिटर्न. अब 20% ROE पे कौन सी माइनिंग जो है वो फीजेबल हो सकती है? तो आई थिंक लेटली शायद कुछ किया है. 20% से अबुल साहब ज्यादा वाकिफ होंगे. ये 12% है जी. 18% है सर. अब सब्सिक्वेंट फेजेस में 18% है सर फॉर कोल माइनिंग सर. 18% हो गया किया है. ये फॉर सच प्रोजेक्ट्स 12% इज अ गुड. सो एक तो रेट ऑफ रिटर्न का इशू है. फिर अच्छा सॉवरेन लोन जो है 3.5% पे लोन लिया गया. 7.8% लोन जो है 1.8% है सर. 3 पॉइंट बहस वैसी हो जाएगी, कंट्रोवर्शियल, चलिए इसको छोड़े. लेकिन ये आप जरा देखिएगा नंबर को. तो बात ये कि देखिए एनीवे फाइनेंसिंग कॉस्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ ROE एंड डेट, ये दोनों एक्सेसिव रही हैं. और आई होप ये 18% कह रहे हैं, इसको मेरा नज़र में 12% पर आना चाहिए. दूसरा जनाब टेक्नोलॉजी के इशू पे जो ट्रक्स मैंने देखे हैं इनके हैंगरों के, हो सकता है आप बदल दिए हों, तो वो तो साहब दुबई से लाए हुए जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के शावल, छोटे
छोटे छोटे ट्रक, तो उनसे काम, माइन में आप दुनिया में कहीं भी जाएं 250 टन के ट्रक होते हैं। और इसी तरह एक्सकेवेशन जो है, अब अमेरिका में ड्रैग लाइन यूज होती है, यूरोप में बकेट व्हील, इंडिया में 1950 से बकेट व्हील एक्सकेवेटर यूज हो रहा है। 1950, जरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मेरी नज़र में एंग्रो में एक बड़ा एक पैसे और एक फास्ट ट्रैक टेक्नोलॉजी को नहीं कर रहे, डरते हैं या कुछ। अब देखिए, मैं अमूमन कहता हूं कि लोगों को बुरा लगेगा कुछ, पाकिस्तान में ये जीरो इक्विटी सिंड्रोम है, इक्विटी लगती नहीं है, केपेक्स बढ़ा दी जाती है, फिर पैसे कम पड़ते हैं इक्विटी, तो वो इस तरह की चीजें की जाती हैं। तो आपको मैंने कल तस्वीर भेजी थी ड्रैग लाइन की, सिर्फ बकेट व्हील एक्सकेवेटर इज नॉट एन ऑप्शन। ड्रैग लाइंस अमेरिका में यूज होती हैं, उनका क्यूबिक, एक बकेट का, इनका क्यूबिक मीटर शायद 2-4 ही क्यूबिक मीटर हो, वहाँ 50-60 क्यूबिक मीटर का बकेट यूज होता है। तो देखिए बात यह है कि, और इनको इस्तेमाल करने के लिए कोई इस वक्त बकेट व्हील को, तो हो सकता है आप कह सकते हैं कि देयर आर सम इश्यूज। ड्रैग लाइन जो है, अच्छा फिर आप ये बिजली की बात कर रहे हैं, भाई बिजली तो आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिजली का आप क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जी बिजली नहीं है? भाई बिजली तो है। इसी तरह इनका टेक्नोलॉजी में मैं आपको बिजली का बताऊं, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 38-39% है एज आई नो। और अब ये जो लकी प्लांट लग रहा है, इसकी आप थर्मल एफिशिएंसी देखिए। तो ये मेरे ख्याल में, देखिए बड़ी अच्छी बात है, एंग्रो ने इनिशिएटिव लिया और सब कुछ सही है, लेकिन ये कि इन्हें अपना री एग्जामिन करना चाहिए। इतना कंजर्वेटिव और डर डर के, और जनाब के जी वो हम अपना स्केल बढ़ा देंगे तो जना जाने क्या आफत आ जाएगी। और ये हम जो है औरतों से ट्रक चलवा के छोटे छोटे हैं जी आप जरा देखिए तो सही, यानी आप एक टिपिकल माइन जरा जाके इंडिया में देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। तो वो मायने देखिए और इनका इक्विपमेंट देखिए, तो ये ऐसा लगता है बच्चों का खेल हो रहा है। तो ये कॉस्ट डेफिनेटली कम की जा सकती है, और इवन करंट स्केल पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी लाई जा सकती है जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो। थैंक यू। राइट, आप इसके ऊपर जो हमारी फ्यूचर की पिट्स हैं, फिर जो ब्लॉक 1 वगैरह के ऊपर, उसके ऊपर कमेंट करेंगे। चलें, ये वाला जो इन्होंने RWE का रेफरेंस दिया, कंसल्टेंट्स ने इनको रेकमेंड नहीं किया बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, तो क्या वो लिमिटेशंस एप्लीकेबल हैं बाकी ब्लॉक्स के ऊपर भी? सर ब्लॉक 1 का सिर्फ मैं बता दूं, ब्लॉक 1 एक तो पहली बात ये है कि जो अख्तर साहब ने कहा कि हम वो 2-3 क्यूबिक मीटर वाले शवल यूज नहीं कर रहे। वो इनिशियल जब हमने 2014-15 में स्टार्ट की थी माइनिंग, तो उस वक्त लोकल ट्रक इस्तेमाल किए थे, बट जैसे फाइनेंशियल क्लोज हुआ था तो हमने 60 टन कैपेसिटी के ट्रक्स हैं हमारे, और 7 क्यूबिक मीटर जो कि 14 टन मिट्टी उठाता है उसमें, उस तरह के शवल्स हैं। ब्लॉक 1 एग्जैक्टली वही इक्विपमेंट कॉम्बिनेशन यूज कर रहा है फॉर फेज 2 माइन जो हमने यूज किए हैं। 60 टन के ट्रक, इस वक्त 330 ट्रक चल रहे हैं ब्लॉक 1 में, शंघाई में 60 टन के चाइनीज ट्रक, और 7 क्यूबिक मीटर के लीवर के ब्रांड के वो चल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली यूज हुई है। उनकी कोल प्राइस हमसे $5 कम है। उसकी बेसिक वजह सबसे बड़ी ये है कि उनका जो पहला ही स्टेप था वो 8 मिलियन टन की माइन है। उनकी जो टैरिफ है वो हमसे $5.5 कम इसलिए है कि उनका पूरा प्रोजेक्ट वो 42 महीने में कर रहे हैं। हम अपना 7.8 चूंकि फेजेस में किया था, हम कर रहे हैं 84 महीने में। 7 साल वर्सेस 42 महीने। इस पे IDC भी कम है, इस पे बाकी तमाम चीजें भी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सारी जाती है, बिकॉज उनके पास बैलेंस शीट फाइनेंसिंग है। शंघाई ने पूरी की पूरी फाइनेंसिंग अपनी बैलेंस शीट पे की है, और उनकी जो माइनिंग कंपनी है वो भी उनकी अपनी सब्सिडी है। ये चीज this is exactly the financial module I was talking about. इनका financial module was not correct. They should have planned it that way कि भी आपने कॉस्ट कम करनी, जब इनको था कि भी
कास्ट कम करनी नहीं है, मतलब जो जिस पे निकलेगा वो बिक जाएगा। तो देन वही हुआ कि छोटी माइन डेवलप की। शंघाई वालों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने उस बेसिस पे उन्होंने वर्किंग की, एंड दे नो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि शंघाई वुड हैव आस्क्ड फॉर लेस, बट सिंस वी हैड गिवन $55 और $65 टू एंग्रो, तो उन्होंने नेगोशिएशन करके वो 55 पे आ गए। वरना इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम टॉकिंग टू आई एम इवन टॉकिंग टू सीएमसी इन चाइना नाउ। हाँ, मैंने उनसे कहा जी मुझे $25 से $30 के अंदर आप माइनिंग करके देते हो। उन्होंने कहा कि स्लाइटली मोर, दिस इज द आंसर वी गॉट कि जी 25-30 स्लाइटली मोर। बात ये है कि ये माइनिंग में अगर आप उनको ये कह देते कि सस्टेनेबल प्राइस चाहिए हमें प्रोडक्ट की, जो कि वर्ल्ड कम्पीट होना चाहिए, जिस तरह ऑयल प्लेट के ऊपर आता है ये प्राइस है, कितने उसकी सेम वे इट शुड बी डन फॉर कोल एज वेल। राइट, श्योर। अच्छा, मुझे जो इसको डिस्कशन को आई थिंक वी जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बकेट व्हील टेक्नोलॉजी और जो अख्तर साहब ने अभी बात की, आई मीन इज इट प्रैक्टिकल? अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, आई थिंक इट शुड नॉट एक्चुअली टेक लॉन्ग। RWE ने अगर कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, मे बी अनदर opinion may be sought to actually get to this level of confidence, but I'm sure ये सारी feasibility जो दूसरी block 1 में भी हो चुकी है. I think we can move forward to take further views where we are currently and what we've learned. What are certain steps need to be taken to move forward and learning, incorporating the learnings that we have? I think I have a few more panelists actually to take views from. I'll move to Nahid Maiman, who is working on block 6 support. जी नजम साहब, one thing मैं एक चीज को फॉलो कर लूं क्योंकि उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में, टेक्निकल आसानी। सी आई बीन ए माइनिंग मशीनरी मैन। मैं कैटरपिलर के अंदर मैंने 15 साल काम किया है, हर किस्म की मशीनरी यूज की है हमने। बात यह है कि माइन के अंदर जब एक दफा आप पहुंच जाते हो सीम के ऊपर, उसके बाद आपने उसको स्क्रैच करना है और उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ये दो कॉस्ट हो। आप अगर ट्रक बड़ा क्यों लगाते हैं? इसलिए कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है कि आपने जो 60 टन का ट्रक है उसकी फ्यूल कंजम्पशन इतनी है और उससे जो 3 गुना ज्यादा है उसकी कंजम्पशन 3 गुना नहीं होती है, फ्यूल कंजम्पशन उससे कम होती है। सो यू डू द सेविंग। सेम वे आप एलिवेटर्स इस्तेमाल करते हो कि आपका जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो कम हो जाए, क्योंकि मेन माइनिंग का और क्या है कि वहां आपने उसने शावल ने उसको काटा, ट्रक में डाला और ट्रक जो है वो कई मील चल के ऊपर पहुंचाता है उसको। अगर आप उस डिस्टेंस को शॉर्ट कर दें थ्रू एलिवेटर्स, your price will reduce. These are the basic technical items जो कि कोई भी इंजीनियर जहां खड़ा होगा वो कहेगा यार इसको इस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, and we need to consider that. अनिल साहब अपना एक सेकंड बस मुझे देंगे। मैं जो साहब ने अख्तर साहब ने बात की टेक्नोलॉजी, जैसा फजल अगर 1 मिनट में हमें ये 30 सेकंड बता दे, क्या हम न्यू टेक्नोलॉजी को क्यों यूटिलाइज नहीं कर सकते? वाई वी कैन नॉट यूज व्हाट पीपल आर सजेस्टिंग के अगर ये आप टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आपकी कास्ट मजीद अच्छी हो जाएगी। इसमें क्या कोई हर्डल है क्या? व्हाट इज इशू? सर देखिए, हर्डल सिर्फ और सिर्फ हर्डल जो है इसमें ये है कि ये जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर्स हैं या IPCC इनपुट कन्वेइंग एंड क्रशिंग है, ये उसी वक्त लग सकता है कि एक दफा आपकी माइन अपने बॉक्स कट पे पूरे पे पहुंच गई। ये बॉक्स कट बॉटम ऑफ द पिट को कहते हैं। अभी हमारा बॉक्स कट 600 मीटर पे है, अल्टीमेटली हमने 1250-1300 मीटर बॉक्स कट पे पहुंच जाना है। उस वक्त आप इनपुट कन्वेइंग एंड क्रशिंग भी लगा सकते हैं, जिसके लिए बिजली चाहिए होती है। और जो बिजली की बात कर रहे हैं साहब, यस माइन माउथ पे बिजली प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम पिछले 3.5 साल से लगे हुए हैं, हमें आज तक उस पावर प्लांट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला। नेपरा डज नॉट अलाउ पावर to be given to anybody other than the national grid। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये इसको आप पहले हेस्को के पास जाएं, हेस्को की ग्रिड से फिर आप वापस कनेक्शन लेकर आएं और अपनी माइन के लिए यूज करें। अगर यही सस्ती बिजली हमें माइन माउथ पावर प्लांट से डायरेक्ट मिल जाए तो ये इनपुट कन्वेइंग क्रशिंग जो नजम साहब बात कर रहे हैं कि ये जो आपके या बकेट व्हील एक्सकेवेटर जिसके अंदर एक के अंदर 5-5, 7-7 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, वो डीजल बेस पे नहीं चल सकते या RFO पे नहीं चल सकते, वो बहुत महंगे पड़ेंगे।
और दूसरी चीज जो इनिशियल केपेक्स है सर वो बहुत महंगा है इसका। तो यस, ये सारी चीजें आएंगी अगर आप हमारी फिजिबिलिटी देखें। तो अल्टीमेटली हमने ये छोटे 60 टन के ट्रक पे नहीं चलना। ऑलरेडी मैंने बताया कि हम 100 टन के ट्रक पे चले गए हैं, 100 टन के ट्रक ऑर्डर हो रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ही इनपिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग। और एक और चीज मैं बता दूं कि 8वें साल के बाद मट्टी बाहर लेके जानी नहीं पड़ती। मट्टी को हम जो पीछे खड्डा खोदा होता है उसी के अंदर वापस डालते हैं। तो डिस्टेंसेस जो 7 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के हैं वो कम होके 2.5 से 3 किलोमीटर रह जाते हैं। ये सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं जो कि अगर फेस टू फेस मीटिंग की जाए तो उसके अंदर मैं एक छोटा सा पॉइंट मैं साहब ड्रैग लाइन के बारे में भी जरा बता दीजिएगा अबुल फजल साहब कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाई कांट यू यूज ड्रैग लाइन। चलिए बकेट व्हील एक्सकेवेटर आप नहीं यूज करना चाहते, व्हाट अबाउट ड्रैग लाइन? सर ड्रैग लाइन भी जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है उसको हमारी थर की जो बेंचेस हैं वो 12-12 मीटर की बेंचेस हैं, 15 बेंचेस हैं। हर बेंच के ऊपर आपको एक इक्विपमेंट लगाना पड़ता है ड्रैग लाइन का या कोई बकेट व्हील का, और इसकी वजह से आपका केपेक्स बढ़ता है। आपको ड्रैग लाइन चलाने के लिए भी वो टेक्नोलॉजी और वो केपेक्स चाहिए है लगाने के लिए। ये ड्रैग लाइन की स्टडी भी हुई है डॉक्टर साहब, कि जिसके अंदर ये बताया गया था कि इनिशियल केपेक्स को किस तरह से लो रखा जाए। हमारे पास लिमिटेशन इसकी नहीं थी कि आप अगर बकेट व्हील लगा के डायरेक्ट 15 मिलियन टन की माइन बनाए तो आपका कोयला सस्ता होता। आपकी बात, सारे एक्सपर्ट्स की बात बिल्कुल सही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेकिन ये बकेट व्हील की जो इनिशियल केपेक्स है, इनिशियल केपेक्स की बात कर रहा हूँ, वो किसी भी अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो शवल एंड ट्रक से महंगी होती है। उस इनिशियल केपेक्स के लिए ना तो हमारे पास फाइनेंसिंग सोर्सेज अवेलेबल थी और ना ही इतना टाइम और बिजली अवेलेबिलिटी भी हम लगा सकते थे। मैं साहब एक थोड़ा सा मुझे दो नतसो साहब, आपको राइट साइज के आप ना ट्रक यूज करना चाहते हैं, अब आप जा रहे हैं, अब भी आप 100 टन पे जा रहे हैं बजाय 200-250 टन के, ना ड्रैग लाइन आप यूज करना चाहते हैं, ना बकेट व्हील वहाँ 1950 से यूज हो रहा है इंडिया में। 1950 से यूज हो रहा है सर, लेकिन सर उन्होंने एक मिनट सर वो खत्म हो गए। अगर आप गुजरात मिनरल में जाए ना सर, नहीं सर अख्तर साहब आप यहाँ बैठ के तो बात कर लेते हैं। सर गुजरात जो है मेरे भाई, गुजरात तो बहुत, मेरे भाई गुजरात की तो छोटी माइन है जो वहां की बात हो रही है। नहीं, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ उनीर साहब, मैंने आपको जरा ड्रैग लाइन की तस्वीर भेजी थी, अगर आप लगा दें तो मैं आई वुड लाइक टू कंटेस्ट दैट पॉइंट के ड्रैग लाइन यूज हो सकती है। नहीं, सारी नहरें ड्रैग लाइंस ने बनाई है यार। ड्रैग लाइन को आप इधर तस्वीर दिखा दीजिए, एवरीबडी वुड जस्ट नो। अगर आप वो तस्वीर देखेंगे तो ड्रैग लाइन लगाना कोई, इट्स नॉट इट जस्ट, यानी अब देखिए ना, अगर आप, नहीं मतलब ये है कि मेरे तो भाई समझ में नहीं आता, आप ये जरा देखिए अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लीज टेल मी। और go to the next बकेट व्हील को तो आप ये कह सकते हैं कि चलिए ये एक बड़ा मामला है काफी, लेकिन ये ड्रैग लाइन को जरा सामने देखिए, कॉमन सेंस है, जरा देखिए क्या मसला है। तो और ये ड्रैग देखिए, जब तक आप राइट इक्विपमेंट नहीं यूज करेंगे, जब तक आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी। मेरे तो भाई समझ में नहीं आता, केपेक्स आपके पास कम था। एक मिनट सर, दो जुमले सर। केपेक्स जहां तक साहब हमने देखा है बहुत केपेक्स था। अब मैं आपको केपेक्स की डिटेल में जाऊंगा तो फिर जरा बदमजगी पैदा होगी। बहुत केपेक्स था, ये तो जीरो इक्विटी सिंड्रोम है और क्या है। केपेक्स बहुत है। आप जरा केपेक्स पर आप एक अलहदा मीटिंग रखिए तो फिर मैं आपको साबित करूंगा कि कितना ओवर केपेक्स है। बल्कि ये हुआ है कि केपेक्स जो है सरप्लस हुआ है, ये आगे उसको लेके जा रहे हैं। ये खबर जो है अभी पोशीदा है। थैंक यू। अच्छा, शुड वी मूव ऑन? आई थिंक ये आपने देख लिए कि जो लार्जेस्ट इक्विपमेंट का पॉसिबिलिटी है, आई एम श्योर के कंसल्टेंट्स ने इसको देखा है, और आई थिंक फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल एवरीवन, उनको अगर कोई मजीद कोई रिव्यू की जरूरत है तो आई थिंक दैट can be looked at and for future usage as well. I move on to other panelists. हमारे साथ Naheed Memon, who is the CEO of Oracle. I'd just like to ask her views on what we've learned so far and what
few steps that she may recommend going forward, जो उनकी learnings हैं. So, Ms. Naid. जी, Assalamualaikum. Thank you, Aneeb Saab, and thank you everyone that you've considered me worthy of sitting along with all of you. I think मैं एक sort of top level कुछ 2-3 बातें करना चाहूँगी. पहले तो I don't know खालिद मंसूर साहब अभी हैं या नहीं है, but I'm really grateful to him कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इतना ज़्यादा sort of credit दिया, because जब मैं देती हूँ तो कहा जाता है कि जी आपका प्रोजेक्ट ही उनका है, या इम्तियाज शेख साहब का प्रोजेक्ट हो गया या किसी और का हो गया. तो एक बात आपके तवस्सुल से कह रही हूँ कि एक ये भी प्रॉब्लम होता है ब्लॉक 6 और हमारे प्रोजेक्ट के साथ, दैट वी आर ऑलवेज गिवन दैट सॉर्ट ऑफ परसेप्शन एक क्रिएट हुआ है. बहरहाल, दूसरी बात उन्होंने एक कही थी जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कि उन्होंने कहा वो फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे, C2G और C2L की, और उन्होंने कहा कि 10th JCC में इसको इंक्लूड किया जाएगा. तो आई जस्ट लाइक टू करेक्ट दैट कि 9th JCC में C2G और C2L ऑलरेडी CPEC का हिस्सा बन चुका है. So that has already happened, and that was actually conceived, and this idea was developed, and Block 6 kind of led that, and this happened in 2019. So it's a 2-year-old sort of development. अच्छा, going forward बहुत बातें हुई अभी कि प्राइस कैसे कम की जाएगी, and I won't be able to sort of contest or argue with what Abul Razi Saab has said, obviously, because he is on ground. He has a success story, and they have done it, and they know the numbers better. But from where I stand, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि this government is on a track of reducing the costs for electricity as well as for all the inputs, and it's a right track to take. उसके सिलसिले में उन्होंने ऑलरेडी, अब आप देख रहे हैं कि IPPS के साथ नेगोशिएट कर लिया है और या करने जा रहे हैं. आई थिंक कुछ फाइनलाइजेशन की तरफ जा रही है बात, और 12% तक वो एक रिटर्न के बारे में बात की जा रही है. Clearly this will also be applicable to all new projects, whether it's for power or any other sort of sellable or an input such as coal as well. So ये जो रिटर्न की बात है, ये तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक सब पे अप्लाई करेगी, एंड इफ वी वर टू कम फॉरवर्ड टुडे, वी वुड बी रेडी एंड आर विलिंग टू प्रोड्यूस एट अ रिटर्न व्हिच इज क्लोज टू व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स, एक्सपेक्ट्स, और इवन लोअर परहैप्स. एंड अभी कुछ बात हुई, आई थिंक नजम साहब कह रहे थे कि उन्होंने CME से बात की है, तो हम जिनके साथ काम कर रहे हैं, द China Coal is China's ex-ministry of coal, and they have 300 million tons of coal that they develop in China. So they're not EPC contractors per se, they are coal developers, and they develop coal as an asset. So they develop coal for power, for liquid gas. They have the largest single plant urea manufacturing in Mongolia. Why I share this with you today is because the conversation has been about reducing costs. Reducing costs, you can correlate that with technology. And if you are talking about specialization, and if you have a player like that or any other player which is actually a specialist in mining and coal mining, you would stand a better chance of reducing costs. Now, this probably has not been the case so far because it was a pioneering effort, and one has to give credit where it's due. But now that we have been through that pioneering effort, a few things have transpired. The learnings, government learning, regulatory learning, on-ground learning, etc. So going forward, चाहे वो माइन बड़ी हो या दूसरी माइनें खुलें, I think कि better technology should be an outcome of all this learning, and we per se are obviously already looking at that. Bucket wheel excavators की बात हो रही है, हमने तो ऑलरेडी बात की है कि जी आप 250 टन की ट्रक यूज करें, बिकॉज व्हेन वी कम इन और व्हेनेवर वी कम इन, वी वुड कम इन ऑन अ लार्जर स्केल, बिकॉज स्केलेबिलिटी की भी एक बात है. बट ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस हैज टू डू विद द काइंड ऑफ फ्रेमवर्क which is then set about, and I think हम जो सारी बातें अभी कर रहे हैं वो यही है कि इस फ्रेमवर्क को बेहतर किया जाए, नेशनल इंटरेस्ट, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करना है. तो इन दोनों चीज़ों को हमने साथ लेकर चलना है. आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि देखें, कोल का जो यूसेज है, इंडिया is producing 700 million tons of coal per year, and that is approximately what they had last year. We are probably less than 20 million. I don't even know where we stand today. Coal for and India has also made a commitment of investing
5 trillion rupees, and I quote their last budget projections, 5 trillion rupees, which is $55 billion, to open 40 new coal mines for coal gasification for urea and liquefaction. This is the direction they're going in. China is saying to become a 3 trillion or $1 trillion economy, coal is going to be the largest contributing asset. So एक चीज तो ये है कि हम कोल को avoid, neglect, या उसको आप you can't relegate it to a lower status or position as an asset. We have to consider coal as an asset, employ the right technology, and then also regulate returns and prices. So I think up तक जो higher prices की बात हुई है, that has to do with the regulatory framework. आपने एक upfront tariff दिया हुआ था. अब अगर आप कॉस्ट प्लस में जाते हैं और आप एक रिटर्न ऑन इक्विटी को लिमिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी वो उसके तहत होंगी. सो इफ यू हैव दैट फ्रेमवर्क इन place, I don't have any doubt in my mind that the next few developments as we proceed will be favorable both for the investor as well as for the country. Thank you. Thank you, Ms. Naeem. We move on this note on the learnings of regulatory learnings at the government side and learnings at the mine front. So these have to be captured, and the main objective is to bring the cost down. And when we talk about C to G, I think we have Azam Khan Saab with us, and if you would like to add your views, Azam Khan Saab. Yes, Munir sir, and if sir, I've been listening to all the things that you've been saying. And one of the basic things that we all discuss all the time is the economy of scale. Now, you can't just use the economy of scale for power generation alone. We are short of natural gas. We are short of ammonia, fertilizer. We are short of so many other things. And the coal gasification can produce both SNG. It can produce ammonia. It can produce a dozen other products, which will help to reduce the cost of the coal itself. Because once you look at the overall picture, you'll find that it is all these costs have contributed towards the project, and you come down to a very low rate for the actual final product that you get. And that's what we want. We don't want to have more expensive power or more expensive gas or more expensive fertilizer for that matter. And the other thing that I think I mentioned this the last time also, that we are developing this North Indus cascade where we hope to get a lot more power and water. And once you have the water and you have the fertilizer from Thar, you will then be able to revolutionize your agriculture. And agriculture will then help to sort of help the agro-industrial sector. And that the idea is we are now actually restricting ourselves to a very limited sort of a thing. Buckets ka kya hoga or flan cheese ka kya. The point is, we need all the coal that we can get out of here as cheaply as possible, and then use that coal, or not just for we need to use it for SNG production. We need to use it for other petrochemicals. There are at least a dozen petrochemicals that they produce. The small plant in North Dakota produces about a dozen petrochemicals, and those petrochemicals then offset the cost of the coal, and that way you end up with a relatively cheap. Becomes economical. You just can't think of only you just got power and we say you got surplus power now. So we will not then rely on power alone. So we've got to look at the overall picture. We've got to go for a big SNG plant, which also produces gas and power, and also gives all these fertilizer and petrochemicals. And in fact, some of the petrochemicals will probably be exported so that we can earn foreign exchange out of that. And it is such a valuable resource that we've got. And we are discussing things like the drag lines and I don't think that's just, you've got to think in a rather bigger way than that. And that's why we really need this. You see, the biggest energy reserve in the world,
Thar coal is the biggest energy reserve in the world, and biggest single energy reserve in the world. We are not using it. We are so far. I must congratulate SECMC with what they've done, because I know that in 2003 and 2004, when I usually discuss this with people, there was some gentleman from BHP mining company in Australia, and they said there's nothing in Thar coal. There's just dust, and you can't mine it because of the water and so many other things. Now they have done a great job. They've actually started getting the coal out. Once you get the coal out and you start using it for power generation, although that is probably the simplest way of using it, and we want to go much further than that. We've got to go and develop SNG fertilizer, and of course there are a dozen other things that you can do with it. Yeah, thank you, Azam Saab. I think these are concepts of definitely gasification, and the objective is that if we can produce the coal at the lowest possible price, then only the other options will make sense. So with this, we move on to Dr. Tahir Abbas. Are you there? May I say something? If you actually take the cost of the price, the cost of these byproducts, and then deduct that from the overall cost that you're incurring, you'll find that the cost of production of the coal comes down substantially. So we will have a low price of coal. Right. Okay. And there are two ways. One is to economy of scale, you produce more and you make it cheaper. Or the other thing is to have all these byproducts and use the byproducts then offset the price. So we have Azam Saab, I think we have another detailed session planned on that. So I think maybe we can have a detailed discussion there. And I think we now, sir, say sir. जस्ट एक सिंपल क्लैरिफिकेशन, एक क्वेश्चन है जो एक्सपर्ट्स अबुल फजल शायद बता दे, या नजम फारूक साहब या अख्तर साहब, अगर जो हम ये कास्ट आप पर मिलियन BTU की एनर्जी में जब कास्ट करते हैं $5.2 पर मिलियन BTU और $4.2 पर मिलियन BTU, एट द एंड ऑफ द ये कास्ट, क्योंकि आज हम जो गैस की भी पे कर रहे हैं वो BTU वैल्यू में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर इंडिजिनस गैस जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो तकरीबन हम $6 पे 2012 की पॉलिसी में 6.31 से ऊपर है डॉलर पर मिलियन BTU। अगर एट द एंड ऑफ द डे हमें ये 4.2 या $5.2 पर मिलियन BTU थर से एनर्जी मिल रही है, तो वो एक्सपेंसिव कैसी है, मुझे समझ नहीं आती कंपेयर टू दिस इंडिजिनस गैस वैल्यू में। नहीं सर, ये आप मिक्स कर रहे हैं, ये कोल की BTU है, ये गैस की BTU नहीं है, ये BTU गैस की नहीं है। जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे गैस में तो फर्दर रिडक्शन कम्स डाउन, उसके अंदर कुछ चीजें बर्न हो जाती हैं, कुछ और चीजें हो जाती हैं, तो गैस की BTU डिफरेंट होती है कोल की BTU से। अच्छा, ये उस कंपैरिजन में है जी। थैंक यू। दूसरा मेरा क्वेश्चन अपना नीम साहब, एक क्वेश्चन नईत मेमन साहिबा से है कि जो कोल की वो कह रही है कि अभी हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है या नहीं है, या उस पर क्या काम हो रहा है? जी okay, in the next 5 minutes I will just invite people who've joined in, if they would like to ask the questions from the panelists, then we will proceed to wrap up. So I can invite, if you think you would like to ask a question, then raise your hand and Thar Saab can let them speak. सर मैं ये डॉक्टर साहब का एक जो सवाल था गैस के ऊपर, मैं उसका एक मेरे सामने पेपर पढ़ा हुआ है सर। वी गॉट ए स्टडी डन रिसेंटली अबाउट 2 weeks बैक कि जहां हमने थर कोल की स्पेसिफिकेशन के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट गैसिफिकेशन का, जो पैरेलाइजेशन का नया प्रोसेस है जो इस्तेमाल किया जा रहा है गैसिफिकेशन के अंदर, उस पे किया। तो वो गैस जो बन रही थी वो इट वाज 4300 किलो कैलोरीज पर NM क्यूब, उसकी फिगर आ रही थी, हीट वैल्यू उसकी थर कोल की। ओके,
Thank you. ये जो मेरा क्वेश्चन जो ये है, जनरल आजम खान साहब ये बात कर रहे थे, जो ये सिन गैस की और दूसरी की बात करें, इस पे इनके मुताबिक अबाउट $2 बिलियन या कास्ट आती है, तो ये प्रोजेक्ट हाउ वी विल बी एबल टू मैच्योर दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट जो आप यूजुअली बात करते हैं जी, हमें थर से जो है सिन गैस और पेट्रोकेमिकल ये सारी रिलेटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाउ मच टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड द फ्रेमवर्क वगैरह वगैरह। मैं अर्ज करूं जनाब। मुनीर साहब, आई थिंक मुझसे कोई बात आप लोगों ने की थी, मैं उठ के चली गई थी, अगर आप चाहें तो मैं बात कर सकती हूँ। जी आप बात कर रहे हैं, मैंने ये पूछा था कि जो फ्रेमवर्क की बात आप कर रही थी कोल के फ्रेमवर्क के जो रूल्स की, वो क्या स्टेज है, व्हाई वी आर नॉट मेकिंग इट, अगर बने हुए हैं तो व्हाई वी आर नॉट अप्लाइंग इट, व्हाट इज इशू? जी बिल्कुल। ऐसा है कि वो इस वक्त फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज अ न्यू डायमेंशन दैट इज बीइंग एक्सप्लोर्ड, लेकिन मेरी असद उमर साहब के साथ मीटिंग्स भी हुई हैं इस सिलसिले में, और पेट्रोलियम डिवीजन में भी हुई हैं, एंड देयर इज सम प्रोग्रेस ऑन at a very initial stage of how this can be put together, which can accommodate and protect investment as well as deliver what the government requires, and which is, if possible, produce syngas, either for converting it into urea, ammonia and urea, or using it as like commercial line gas, etc., and even liquid. अच्छा, अब बात हुई थी कि वो क्या इसकी feasibility है और कहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो मैं एक बहुत ही आपको, I'll just share a view which is taken by, for example, China Coal, because they understand this resource really well. उनके ख्याल में जो हमारा लिग्नाइट है वो गैसिफिकेशन फॉर यूरिया के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है. इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड इट इज समथिंग दैट कैन बी इजीली डन. हाउएवर इट रिक्वायर्स द कोल हैज टू बी एट द राइट प्राइस. तो हमारा भी वही चैलेंज होगा कि कोल की प्राइस हमें सही मिलनी चाहिए फॉर दिस टू एक्चुअली वर्क, एंड दैट इज वेयर एवरीवन हैज टू जॉइन हैंड्स एंड देन डिलीवर दिस, कि कोल की सही प्राइस आए और फिर वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाए. अच्छा, सिन गैस को अगर आप ये जो है आपकी लाइन गैस, इथेन एंड मीथेन, और जिस तरह आप डालते हैं लाइनों में, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये हो सकता है. द इशू इन पाकिस्तान फॉर दैट इज ट्रांसफरबिलिटी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, और इसकी जो इसका लेट्स जस्ट से द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन एबिलिटी एंड कैपेसिटी इन पाकिस्तान टू डू समथिंग लाइक दिस. इवन इन चाइना दिस इज नॉट a norm, this is a slightly riskier procedure and process. Having said that, it can be done, but in the first stage one has to really do a detailed feasibility of coal and coal gasification and see what it is best for, because मैं आपको एक थोड़ा सा रफ सा एस्टिमेट भी दे सकती हूँ कि अगर नॉर्मल कोल होता है, नॉर्मल कोल, तो उससे अगर आप फर्ज करें 1 मिलियन टन यूरिया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन टन या 1.5 मिलियन टन कोल चाहिए होता है. लेकिन अगर आप लिग्नाइट यूज करते हैं तो उसके लिए बहुत रफ एस्टिमेट आपको मैं दे रही हूँ कि अगर आपको 1 मिलियन टन यूरिया बनाना है तो आपको तकरीबन 3 मिलियन टन्स लिग्नाइट चाहिए होता है, हमारी जो उसकी कैलोरिफिक वैल्यू उसके हिसाब से. सो ऑब्वियसली दिस हैज टू बी सीन कि हमारा बेस्ट अप्रोप्रिएट एंड मोस्ट ऑप्टिमल मॉडल क्या होगा फॉर दिस डिलीवरी. सो 2 सवाल आप लोगों ने किए. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज इन प्रोसेस एंड उसके लिए काम कर रहे हैं. आई थिंक बिहाइंड द सीन्स एंड बिहाइंड द डोर्स देयर इज कॉन्वर्सेशन एंड देयर इज मूवमेंट, एंड इंशाल्लाह आई थिंक द गवर्नमेंट विल बी एबल to have something vis-a-vis a more sort of a draft ready for discussion. तो ये एक चीज है. और दूसरी के हिसाब से this is and I can even go and say, I mean I can probably even say to you in their very rough estimation and view that they take, that this is probably even more feasible than coal to power. Thank you. ठीक है. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I think we now have reached a time to wrap up. And before I ask Saeed Jadunsa for his final comments, I will just wrap up this discussion by stating that cheapest coal is the objective, and in all of that, what we've learned, what we've talked today, we need to be looking at the framework of subsidies, how these
prices and the subsidies are worked at. We need to be looking at possibility of the production cost by utilizing the alternate technologies which are potentially there in the neighboring countries, and the bucket wheel technology, and the other options that we have available. And we need to be looking at the financing cost, what we have from 18% to 12%, and what are the right kind of margins. In the end, there are lots of learnings, and we've gone a long way. And there are learnings from the government side, learnings from the regulatory sides, and learnings at the mining side, people who are working. So we need to incorporate those. What I can suggest and request people who've joined today and who've not been able to join today, if they can send their recommendations by reviewing all of this discussion, please do so to myself, to Farooq Alam Saab, or Saeed Jadoon Saab, so that all of these learnings and recommendations can be incorporated. Saeed Jadoon Saab. जी ओके जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि देयर इज वेरी गुड पार्टिसिपेशन एंड इंथुसियाज्म जो शो किया जाता है। ये मैं पार्टिकुलरली आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ पीसीपी की बिहाफ पे कि आप लोग अपना टाइम निकाल के सैटरडे संडे को इस कौमी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया। इट इज़ अ ग्रेट डिस्कशन एंड वी आर लर्निंग अ लॉट। हमारा लर्निंग कर्व जो है हमारा लर्निंग कर्व जो है दिन ब दिन और हफ्ता बाय वीक वी आर मूविंग अप इंशाल्लाह। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आज भी थोड़ी सी अननेसेसरी डिस्कशन हो गई आपस में, डिस्कशन को फॉर सेक ऑफ डिस्कशन लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर ओपिनियन और वी शुड लिसन टू ईच अदर पेशेंटली, और उसके बाद अपने बारी पे बात करें, बात का जवाब दें। सारे लोग लर्नेड है और एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग आउट ऑफ 60 ईयर ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस या 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको वर्किंग का। हमारे पास काफ़ी सीनियर अच्छे और जिन लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया वो हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वॉलंटियरली। यही हमारी जो स्ट्रेंथ है, ये वॉलंटियरिज्म है कि सारे लोग सिर्फ फॉर द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वी शुड जस्ट एक्सेप्ट ईच अदर व्यू या टॉलरेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी चीज़ों को लेके नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। एनीवे आप सब लोगों का शुक्रिया, और आइंदा इंशाल्लाह हम मजीद इस बात पे करें। एक तो कास्ट ऑप्टिमाइजेशन स्टिल हमारी थोड़ी सी अधूरी है, मैं भी मुनीब साहब से डिस्कस कर लेंगे, इसको लेके जाएंगे। और नेक्स्ट मेरी सजेशन ये है कि अगर अबुल फजल या इनके कोलीग जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रही है, नजम फारूक साहब या अख्तर अली साहब, क्या न्यू टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं विद दिस फ्रेमवर्क कि जिससे हम अपनी कास्ट को ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अबुल फजल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनिशियली कास्ट इंटेंसिव है, कैपिटल उसमें ज़्यादा रिक्वायर है नहीं, ताकि ये ओबाम जो है ये चीज़ एम्बिग्यूटी थोड़ी क्लियर हो जाए। वाई वी कैन नॉट यूज़ द न्यू टेक्नोलॉजी फॉर द माइनिंग पर्पज और फॉर एनी अदर एक्सकवेशन के लिए। इस पे थोड़ा सा एड्रेस कर दें ताकि हम सब लोगों के जहनों से उतर जाए कि टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ नहीं हो रही और किसको कितना ऑप्टिमाइज कर सकता है। इस तरह जो आजम खान साहब का व्यू भी ये था कि हमें उस तरफ जाना चाहिए पेट्रोकेमिकल, उसके बारे में अगर नेक्स्ट टाइम मुनीब साहब से हम डिस्कस करेंगे। आजम खान साहब अगर कुछ ये बयान कर दे जो अपना ये हमेशा ही अपना व्यू बयान करते रहते हैं कि हाउ वी कैन गो फॉर दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन थर। तो ये तो नो डिनाइल है कि थर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट वी हैव इन पाकिस्तान, ये अल्लाह की नियामत है। और हाउ वी कैन यूटिलाइज इट प्रॉपरली, एफिशिएंटली, कास्ट इफेक्टिवली, टाइमली। और ये भी बड़ी अफसोस बात है हमारे लिए है कि एज ए कौम हम अभी तक अपने थर कोल और उसकी डेवलपमेंट के लिए कोई फ्रेमवर्क भी नहीं बना सके। अभी बड़ी चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है कि एटलीस्ट वी स्टार्ट थिंकिंग नाउ। और मेरी नाहिद माइमन साहिबा से गुजारिश है अगर वो इस एरिया में है तो वी शुड एक्सपीडाइट दोज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सो दैट वी कैन इनवाइट इन्वेस्टर, वो आए, वो काम करें, अपने लोग भी काम करें। ये बड़ी क्या कहते हैं आसाने हैं हमारे लिए कि हम अपनी ही चीज़ों की फ्रेमवर्क भी नहीं बना सकते। हमारे पास लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कम से कम जो हमारे पास एसेट हैं उनकी फ्रेमवर्क, उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो हमें ज़रूर काम करना चाहिए। और स्टेक होल्डर की इनपुट भी बहुत ज़रूरी है लेना। आप अगर फ्रेमवर्क जो बन रहा है वो बिहाइंड द डोर नहीं बनानी चाहिए, मेरे ख्याल में वो फ्रंट ऑफ द डोर बनानी चाहिए ताकि लोगों की इनपुट आए, स्टेक होल्डर की जितनी इनपुट आएगी
उतनी ज़्यादा बेहतर फ्रेमवर्क बनते हैं। जो क्लोज डोर में फ्रेमवर्क बनते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम सब लोग हैं, वो इतना अच्छा यूजफुल नहीं होता। तो जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों की इन्वेस्टर्स हैं बाहर से, जो कंसल्टेंट है पाकिस्तान के अंदर है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी नाहिद मेमन साहब से कि लेट्स इन्वॉल्व टेक्निकल पीपल, फाइनेंशियल पीपल, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो भी है, जो आपको इनपुट दे सके और बेहतर फ्रेमवर्क बन सके। क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क बात जो बनते हैं उनमें काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। मैं बहुत सी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि लेट्स ब्रिंग ऑल दोज स्टेक होल्डर्स ऑन द टेबल एंड टॉक एंड लिसन टू देम एंड देन मेक ए गुड रिकमेंडेशन फॉर द फ्रेमवर्क। बिल्कुल सईद साहब, बस मैं इतनी सी गुजारिश करूंगी कि आपकी जो सोच है उसी पे काम किया जा रहा है, एंड इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू वीक्स देयर विल बी अ कंसल्टेटिव सेशन व्हिच आई एम वर्किंग ऑन विद द गवर्नमेंट, एंड आप सबको दावत आएगी एंड वी विल बी सिटिंग टुगेदर, सो दैट इज ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। एंड इंशाल्लाह जब मुझे मौका मिलेगा व्हेन वी मीट नेक्स्ट, तो मैं आपको इसके बारे में बेहतर अपडेट भी दे सकूंगी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, दैट इज रियली रिक्वायर्ड। सर, इसमें जो जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक चीज अगर कर दी जाए कि इसकी वायबिलिटी, कि एक गवर्नमेंट ये कह दे कि जो इंटरनेशनल प्राइस है इसकी क्लैरिफिक वैल्यू के हिसाब से कोल की, उस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट लेकर आए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। अगर वो वारा करेगा तो इन्वेस्टर आएगा, अब उसी साइज से अपनी माइंड बनाएगा, उसी साइज से कूपन लेकर आएगा। अगर आप एक उसको ज्यादा से ज्यादा आप उसको इंसेंटिव देना चाहते हैं कि कहेंगे जी वो किसके ऊपर जो हम सब्सिडी देंगे वो नेगोशिएट कर लेते हैं कि भी हम $5 की सब्सिडी दे रहे हैं, $10 की दे रहे हैं या $2 की दे रहे हैं, बट इट शुड बी एट प्लैट। जो इंडोनेशिया का प्लैट है उसके ऊपर प्राइस जो चल रही है वही प्राइस इनको मिलेगी माइनिंग जो दुनिया में होता है। सब कुछ हो जाएगा। मुनीर साहब बस एक सेकंड, मुझे बस 20 सेकंड के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मैं यूजुअली हम सारे लोग भी ये फील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सब्सिडाइजेशन है ना, सब्सिडी, ये बहुत बड़ी एक अजीब बात है। मैं बताऊं, ये कर्स है टू सम एक्सटेंट। हमने सब्सिडीज को इतना अब्यूज किया, हमने इतना अब्यूज किया है, तो लिहाजा सब्सिडीज की चीज़ों को, सब्सिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को किसी तरीके से हमें हटाना चाहिए। लोगों को सेल्फ रिलायंस पे ही आना चाहिए। भाई जो हम लगाएंगे वो हम पे करेंगे, जो हम यूज़ करेंगे वी शुड पे। जब ये सब्सिडाइजेशन का कॉन्सेप्चुअली चीज़ जो है ना, ये बुनियादी तौर पे जब ये इसका इंट्रोडक्शन होती है तो वो उसका ऑब्जेक्टिव को डिफरेंट थे, अब वो अब्यूज हो रही है बहुत ज्यादा। तो मेरे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वी शुड नॉट इवन टॉक अबाउट दिस सब्सिडी, कभी भी रिकमेंड नहीं करनी। That's even better. Thank you, Said Saab. I think we just need to wind up. I thank all of the panel members for their valuable comments, and we look forward to seeing you again. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।